Bismillahirrahmanirrahim. Dear Islamic finance students, we'll be discussing Murabaha today. Will be the second lecture on the topic of Murabaha. In the first lecture, we covered definition of Murabaha and some basic features of Murabaha financing, how the Murabaha financing is carried out by the Islamic banks. That was carried out in the first lecture. Today, the second part of the lecture mostly covers the different issues which are related to Murabaha financing. In part one, we covered only one issue, that was different pricing for cash and credit transactions. So we covered that issue in detail in part one. Now, in part two, we'll be covering the remaining issues which are there related to Murabaha, and we'll be starting with the issue which is the use of interest rate as benchmark. LIBOR, which is London Interbank Offered Rate, as the criterion. This practice is often criticized since it makes the transaction resemble an interest-based financing, at least in appearance. अच्छा, ये तो इशू समझ लें क्या है कि जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो अपना मुराबा के अंदर जो अपना वो मार्कअप डिटरमिन कर रहे हैं, किस बेसिस पे मार्कअप डिटरमिन कर रहे हैं, दैट मार्कअप इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबोर और काइबोर. पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक का जो रेट है, दैट इज काइबोर कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट. यहाँ पे लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है, पाकिस्तान के अंदर कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है. अब उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुई है कि जी दिस मेक्स दिस मुराबाहा प्रीटी मच सिमिलर टू द इंटरेस्ट बेस्ड लोन, क्योंकि अगर आप किसी कन्वेंशनल बैंक के पास जाते हैं और कन्वेंशनल बैंक से जाके आप कोई लोन लेते हैं, लेट्स से आपने 100,000 का लोन लिया, तो the interest they will be charging on it is also based on काइबोर. और अगर आप वही 100,000 की कोई एसेट परचेज करते हैं ऑन द बेसिस मुराबाहा, तो उसके ऊपर जो इस्लामिक बैंक अपना मार्कअप डिटरमिन कर रहा है वो भी काइबोर पर डिटरमिन कर रहा है. तो ये एक इशू है कि जी ये दोनों तो फिर इन अपीयरेंस, एटलीस्ट इन अपीयरेंस, ये दोनों चीजें एक ही हैं. अच्छा जी, ये तो हो गया इसका जो इशू है. अब इसका आंसर क्या है कि जी इज इट समथिंग व्हिच इज ऑब्जेक्शनेबल फ्रॉम शरिया पर्सपेक्टिव, या शरिया के हिसाब से कोई ऐसी चीज है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है? तो ऐसा नहीं है. इस्लाम ने जो है ना प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन के लिए कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया, रादर इट इज लेफ्ट ओपन ऑन द पार्टीज हु आर डीलिंग विद ईच अदर. ठीक है जी. तो इस्लाम ने अब आपको आप किस बेसिस पे अपना प्रॉफिट डिटरमिन करें, क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ इस्लाम ने फिक्स नहीं किया. म्यूचुअल एग्रीमेंट से तय किया जा सकता है. तो अगर एक बैंक जो है इस्लामिक बैंक काइबोर को यूज करता है एज अ क्राइटेरिया और वो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल है, तो देयर इज नो इशू, देयर इज नो ऑब्जेक्शन एज फार एज दिस प्रैक्टिस इज कंसर्न. मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी जो बुक है उसके अंदर भी इस इशू को डिस्कस किया और उन्होंने इसमें एक एग्जांपल के जरिए इसको क्लियर किया कि इट इज नॉट द रेट ऑफ प्रॉफिट दैट मैटर्स, इट इज द प्रोसीजर थ्रू व्हिच दैट प्रॉफिट इज अर्न्ड दैट मेक्स द डिफरेंस. तो उसमें उन्होंने जो एग्जांपल दिए कि दो भाई हैं, वो बिजनेस करते हैं. वन ऑफ देम इज डूइंग द बिजनेस ऑफ लिकर एंड द अदर ब्रदर इज डूइंग द बिजनेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, and both of them are charging a gross profit margin of 5% on their sales. Now, although both are charging the same profit margin, but it is not that both are same. प्रॉफिट मार्जिन की वजह से उनका जो है ना वो हलाल और हराम डिटरमिन नहीं होगा, बल्कि नेचर ऑफ बिजनेस डिटरमिन करता है कि वो ट्रांजैक्शन हलाल है या हराम है. तो जो इंटरेस्ट की बेस पे डील कर रहा है, तो दैट ट्रांजैक्शन इज ऑब्जेक्शनेबल. ठीक है, वो जायज नहीं होगी. और जो उसको उसको जो इंटरेस्ट की बेस पे डील कर रहा है, तो वो तो दैट इज नॉट अलाउड. और जो उसको यूज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो इस्लाम सेल को के ऊपर प्रॉफिट को अलाउ करता है. तो दिस इशू इज नॉट समथिंग व्हिच इज ऑब्जेक्शनेबल फ्रॉम शरिया पर्सपेक्टिव. जी क्लियर है ये?
If anyone has any doubt or any confusion regarding this issue, you can ask the question. Otherwise, we'll move to the next issue. Okay, fine. I'm not getting any question from you people, so I presume that this is clear. Let's move on to the next issue. This is the third issue, which is promise to purchase. Okay, होता ये है कि जब एक क्लाइंट मुराबा के लिए मुराबा फाइनेंसिंग के लिए इस्लामिक बैंक को अप्रोच करता है तो इस्लामिक बैंक की रिक्वायरमेंट ये है कि द क्लाइंट हैज टू sign this document which is called promise to purchase. Acha, why the client has to sign this document? Why the client is required to sign this document? उसकी वजह क्या है कि Islamic Bank will incur certain cost for this financing. Because, for example, the client wants to finance some machinery, so Islamic Bank has to procure this machinery first and then sell it to the client on the markup, on the basis of markup. Now, if Islamic Bank has purchased this machinery, but then the client refused to buy it, because client ये कहता है कि जी मेरा plan change हो गया, या I am not no longer interested in this uh, uh, purchase anymore. So then in that case, the uh, amount which will be invested by the bank will be blocked. So that is why this document is required by the bank before they go for the purchase of the machinery. So in a Muraba transaction, the client requests the financier to provide him a particular commodity. The financier has to obtain the physical or constructive possession of that commodity before he can sell it to the client. After the commodity has been purchased, the client might refuse to purchase the commodity. To avoid such a situation, the financier requires the client to sign a unilateral promise to purchase. ठीक है, तो ये promise to purchase के पीछे ये उसकी जो लॉजिक है वो यही है कि इस्लामिक बैंक इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है कि जहाँ पे इस्लामिक बैंक अपनी कॉस्टिंग कर दे और क्लाइंट अपने प्लान चेंज कर दे, तो क्लाइंट को स्टिक विद हिज प्लान या क्लाइंट को बाउंड करने के लिए कि जी वो इस्लामिक बैंक से वैसे परचेज करे, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड. Let's so now how this can be done. This promise to purchase, basically it is one-sided promise. The client is undertaking this, that he is going to purchase the asset from the bank. The promise must have caused the promisee to incur some liability. In this case, this promise is resulting in liability for the Islamic Bank. Islamic Bank को asset purchase करना पड़ रहा है, ठीक है. तो इस promise की बेस पे Islamic Bank वो asset purchase कर रहा है. If the promise is to purchase something, the actual sale must take place at the appointed time. तो यहाँ पे promise is for the purchase of the asset, तो वो that should be executed as it is promised. If the promisor backs out of his promise, the court may force him either to purchase the commodity or pay actual damages to the seller. Now, this promise to purchase is a legal document. ठीक है जी, अगर client जो है वो बैकअप करता है, ठीक है, इस परचेज से और इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं करता, तो इन दैट केस द बैंक विल take this document to the court, और कोर्ट जो है वो उसके बेसिस पे either the court will force the client either to purchase the commodity, या तो उसको परचेज करे, उसकी पेमेंट कर दे बैंक को, या फिर अगर वो परचेज नहीं करता तो बैंक विल the court will allow the bank to auction that commodity. उसके ऊपर अगर बैंक को कोई लॉस होता है तो वो लॉस जो है that actual damages would be paid by the uh, the, by the client. Okay, so this was the issue related to promise to purchase. Fourth issue is in order to ensure payment by the purchaser on due date, the seller may ask the client to furnish a security. ठीक है, it is a credit sale, और credit sale में रिस्क यही होता है कि आपको पेमेंट अगर आपका क्रेडिटर जो है वो पेमेंट ना कर पाए तो आपका पैसा डूब सकता है. तो उससे बचने के लिए बैंक क्या करता है, वो क्लाइंट से इसके
उस एसेट के अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी अपने पास रखता है. The proper way would be that the financier asks for a security. It is also permissible that the sold commodity itself is given to the seller as a security. अच्छा, ये पॉसिबल तो है, लेकिन प्रैक्टिकल इसलिए नहीं है कि क्लाइंट ने दो एसेट परचेज किया फॉर हिज यूज और फॉर हिज बिजनेस पर्पस. तो अगर वो बैंक के पास ही एसेट पड़ा रहेगा तो क्लाइंट उसको यूज नहीं कर सकेगा, तो उस बेस में क्लाइंट को उसमें फायदा नहीं. तो प्रैक्टिकली जो है पहला वाला ऑप्शन ज्यादा इसमें जो है वो ये कर ले कि कोई और अदर एसेट, सम अदर एसेट कैन बी यूज्ड एज अ सिक्योरिटी बाय द बैंक. Another issue involved in Murabaha is guaranteeing the Murabaha. यानी अगर आपके पास जो फाइनेंसिंग की अमाउंट है वो बहुत बड़ी कोई अमाउंट नहीं है, तो उस सूरत में इस्लामिक बैंक गारंटर के लिए भी कह सकता है कि जी आप कोई गारंटर ले आए तो हम आपका ये ट्रांजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर देंगे. नाउ the condition here is that a person can be a guarantee to Murabaha transaction, but that guarantee, that person who is giving this guarantee will not be paid any amount for that. He cannot charge any amount for that. Because charging any amount for guarantee is not allowed in Islam. ये जो है गारंटी के ऊपर, गारंटी के अगेंस्ट अमाउंट चार्ज करना ऐसा ही है जैसा कि अगर आप कोर्ट में कोई आदमी कहता है कि जी मैं आपके लिए गवाही दूंगा, तो उस गवाही के लिए अगर वो इसमें अगर वो उस गवाही के लिए पैसे चार्ज करता तो फिर वो गवाही जो है वो इस्लाम के लिहाज से वैलिड नहीं है. तो इसी तरीके से यहाँ पे भी गारंटी जो है वो तो अलाउड है, गारंटी दी जा सकती है, बट नॉट अगेंस्ट अ पेमेंट. सो फिर कौन गारंटी देगा विदाउट पेमेंट? ऑब्वियसली someone who is very close accomplice to you, someone who is relative to you, he can give guarantee without any payment. So this is the issue here. In order to secure a payment on due dates, the seller in a Murabaha transaction may ask the buyer to provide a guarantee. In case of default of payment by the buyer on due date, the guarantor will be asked to pay the agreed sum of amount. ठीक हो गया जी. तो ये इसमें आ गया. The guarantor cannot charge a fee for providing guarantee except any charges he has incurred in signing up for this agreement. Those who are not able to join this meeting, they don't need to worry because I am recording it as well. So they will be getting the recording of this meeting as well. Okay, let's move on to the next issue. Just read this issue and then I'll come back to you. Penalty for late payment. I'm just giving this message to those who are unable to sign in. Okay, sixth issue is the penalty of default. The term here should be late payment. This is not the penalty for default, rather it is penalty for late payment. Now, in interest-based loans, the amount of loan keeps on increasing according to the period of default. But in Murabaha financing, once the price is fixed, it cannot be increased. Dishonest clients sometimes exploit this restriction. ठीक है, हमने मुराबा के लिए हमने जो क्रेडिट सेल की जो कंडीशंस थी वो देखी थी. In case of credit sales, even if the client fails to make payment on due date, one cannot charge anything extra from him. ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट उससे चार्ज नहीं की जा सकती. तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर उसमें वो लोग द डिसऑनेस्ट क्लाइंट्स विल बी एक्सप्लॉइटिंग दिस restriction, वो
तो इसको फिर एक्सप्लॉइट करेंगे और they will never pay on time and that will result in problem for the bank or financial institution. Now there are two alternatives to deal the problem. दो तरीके से इस problem को deal किया जा सकता है. One is method of compensation and the other is compulsory charity. अच्छा, ये जो दो methods हैं, compensation and compulsory charity, one of them is approved by the scholars, whereas the second method is not approved. This method of compensation is not approved. So let's see what this method is or what this arrangement is. Some contemporary scholars have suggested that dishonest clients who default in payment deliberately should be made liable to pay compensation to the Islamic Bank for the loss it may have suffered on account of default. ठीक है. अब यहाँ पे कॉम्पनसेट करना का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से अगर आप किसी को कोई लॉस, तो आपकी वजह से उसको लॉस सफर करना पड़ता है, तो देन यू आर लायबल टू कॉम्पनसेट हिम. फॉर एग्जांपल, इफ समबडी हिट योर कार, ठीक है, आपकी गाड़ी को हिट कर देता है और फिर उसकी वजह से आपका जो भी नुकसान है, तो यू आस्क दैट पर्सन कि जी ये अब आप मुझे ठीक करवा के दें, बिकॉज दिस लॉस इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट. ठीक है. तो यहाँ पे भी इस्लामिक बैंक को जो लॉस इंकर हो रहा है, क्योंकि टाइम पे पेमेंट नहीं होगी, तो इस्लामिक बैंक कैन नॉट utilize that money or they will not be able to earn anything on that money. So in a way, this is a loss for the Islamic Bank, and since this loss is caused by the client, he should compensate the Islamic Bank for this loss. अच्छा, अब उसमें but the majority of the present day scholars do not accept this concept to compensation due to several reasons. अब वो रीजन क्या जिस वजह से स्कॉलर्स इसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, वन ऑफ देयर पॉइंट इज कि जी टू डिटरमिन द लायबिलिटी और टू डिटरमिन द लॉस, extent of loss, this is not the job of the financial institutions. This is the job of the court. So if there is any loss, then it should be decided by the court, not the Islamic institutions. And secondly, if they are charging this amount due to delay in payment, this delay in payment in case of credit sale is something which for which no extra amount is allowed. So that is the reason कि the majority of the present scholars do not accept the concept of compensation. अच्छा, दूसरा जो इसमें arrangement है, that is of compulsory charity, which is approved by the majority of the scholar. It is also approved by AOFI. AOFI stands for Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. It is a standardizing body which is working for the standardization of Islamic banking practices worldwide. Okay, so what is the concept of this compulsory charity? The second alternative to discourage delayed payments of loans is to ask the debtor at the time of signing Murabaha contract that in case of default, he will pay a specific amount to a charitable fund maintained by the bank. So while implementing this proposal, some points must be kept in mind. Okay, what are those points which need to be kept in mind? First of all, this should be declared in the contract. आपके contract का part होना चाहिए. जब आप मुराबा contract बनाते हैं, तो उसके अंदर ये specified होना चाहिए कि अगर client time पे payment नहीं करेगा, in case of late payment, उसको इतनी certain amount, वो कितनी amount है जो उसको charity में देनी पड़ेगी. Normally it is some percentage of the amount due. ठीक है, जितनी भी installment की amount थी उसका 1% या 2% वो उसको चैरिटी में देना होगा. अच्छा, और वो चैरिटी का उसको बैंक को जमा करानी होगी ताकि इट शुड बी रिकॉर्ड ऑफ दैट कैन बी मेंटेन. ठीक है, बैंक के पास वो अमाउंट जो है वो उसके अकाउंट्स में आ जाए. इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फिर वो अमाउंट चैरिटी में यूज भी हो. तो वो इंश्योर करने के लिए देयर इज शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड which is their part of the corporate governance of Islamic banks. तो शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड जो है इंश्योर करता है कि जो चैरिटी का पैसा था चैरिटी में यूज भी होगा. So these are the proposals which should be kept in mind while implementing this arrangement of compulsory charity. Okay, number 7. The issue number 7 is no rollover in Murabaha.
concept of rollover came is basically something which is practiced in conventional banking. What happens in case of conventional banking? I'll give you an example to help you understand the concept of rollover. For example, a client he borrows 100,000 at the interest rate of 8% for 1 year. It means at the end of 1 year he has to repay that 100,000 with interest back to the bank. Now, this can happen that at the end of the year the client might not be in a position. So the client can negotiate with the bank for rollover. Rollover means that this loan, he will apply to the bank that this loan is extended for further 1 year. And the bank agrees, the client will have to pay additional interest. So whatever was the previous outstanding balance, that was 100,000 plus 8% interest on it. So 8,000 हो जाएगा के ऊपर फिर आप उसको फर्दर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा और he can be. So in case of rollover, तो क्लाइंट जो है ना अपना प्रीवियस लोन जो है उसको रिन्यू करवा लेता है विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस, तो द बैंक इज गोइंग टू चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट. So in an interest-based financing, if a customer cannot pay at the due date due to any reason, he may request the bank to extend the facility for another term. Some Islamic banks who misunderstood the concept of Murabaha started using the concept of rollover of Murabaha as well. The rollover in Murabaha is nothing but interest, pure and simple. ठीक है, तो ये concept rollover का जो Islamic banking के अंदर जो है ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट इज अ सेल, और सेल तो आपने एक दफा एक प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसकी ओनरशिप आपने ट्रांसफर कर दी, तो अब आप उसको दोबारा से सेम आइटम को सेल नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज द इशू दैट जिसकी वजह से ये रोल ओवर मुरादा में अलाउड नहीं. द नेक्स्ट इशू इज rebate on early payment. Some of the banks they offer they started making this contract with the clients कि if you make early payment there will be a discount rebate of certain amount कि जी आपको जल्दी पेमेंट करने की सूरत में उसमें कुछ आपको डिस्काउंट दे देंगे. अब इसके पीछे वो इस प्रैक्टिस के पीछे व्हाट वाज द एविडेंस के जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये करना शुरू किया, और या इसके सपोर्ट में क्या एविडेंस था, तो उन्होंने कहा कि at the time of the Holy Prophet, one of the Jewish tribe by the name of Banu Nazir was living in Medina. They were told to exile. ठीक है, उनको exile किया गया from the Medina. At that time, one of their delegation met the Holy Prophet ﷺ and placed this request that they had loans outstanding or due from the people of Medina. So how they are going to recover those loans? At this, the Holy Prophet remarked that you give give discount and you receive your debt soon. So that is something which is quoted for this for the support of this rebate or discount. But actually, this एग्जाम्पल इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट. ठीक है, जैसे रिसर्च के अंदर हम कहते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स विद मैंगोज, कि अगर आप एप्पल्स पे रिसर्च करें तो फिर आप मैंगोज का डाटा उसमें कोट नहीं कर सकते कि जी टू सपोर्ट योर फाइंडिंग्स. तो यहाँ पे भी इसी तरह से है कि यहाँ पे आप एक तरफ मुराबाह की बात कर रहे हैं जो कि सेल है, ऑन द अदर हैंड आप एग्जाम्पल दे रहे हैं लोन की. तो सेल और लोन तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. whatever is applicable in case of loan, it is not applicable in case of sale. So that is why this argument is not acceptable. Okay, ji. The ninth issue is the calculation of cost. Calculation of cost is the requirement in Murabaha because in Murabaha you have to quote your cost. जब आप बेचते हैं तो आप अपनी cost बताते हैं. अगर आपको cost खुद ही नहीं पता तो फिर आप उसको अगर आपको cost पता है तो फिर आप मुराबाहा का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं. अगर आपको कॉस्ट ही नहीं पता एक चीज़ की तो फिर आप मुराबाहा पे नहीं बेच सकते, फिर आप उसको मुसावमा की बेस पे बेचते हैं जहाँ पे आपको कॉस्ट जो है वो कोट करना ज़रूरी नहीं है. अब ये जो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट का इशू आता है दैट इज़ मेनली इन फॉरेन ट्रांजेक्शन जहाँ पे फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो जाती है. तो फॉरेन करेंसी रेट आर चेंजिंग ऑन डेली बेसिस. तो कौन सा रेट किस दिन का रेट आप इस पर अप्लाई करेंगे वो थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ it can be a point of dispute among the client and the bank. तो उसको अवॉइड करने के लिए either दो solutions हैं, either we keep this whole transaction in foreign currency ताकि ये इशू ही ना आए कन्वर्जन का,
और मिसाल के तौर पे अगर बैंक ने $10,000 पे किए हैं तो क्लाइंट को $10,000 बैंक को पे करने हैं विद द मार्कअप जो बैंक उसको बताएगा 2% या 3% या 4% जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बैंक ने स्पेसिफाई किया होगा, तो वो क्लाइंट पूरी ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में ले जाएगा। सो दिस इशू ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट उसमें कन्वर्जन का इशू नहीं आएगा। दूसरा उसमें ये कि अगर जिस डेट पे बैंक ने पेमेंट किया उस डेट का रेट अप्लाई करके कॉस्ट डिक्लेयर कर ली जाए और उसके ऊपर मार्कअप चार्ज कर लिया जाए। तो ये दो तरीके से आप इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। So how to deal with the issue of frequent changes in foreign currency exchange rates? The bank can charge from client in dollars to avoid differences of exchange rate. ठीक है कि आपने ट्रांजैक्शन ही डॉलर में रखी है तो इशू खत्म हो गया। If the bank has paid by converting Pakistani rupees into dollar, the same amount of rupees can be taken as cost price and the profit of Murabaha can be added thereon. ये मुदारबा is typo here, it is मुराबाहा। ठीक है, तो मुराबा के ऊपर आप जो आपने जितने बैंक ने पेमेंट की है वो बैंक की कॉस्ट आ गई, उसके ऊपर बैंक अपना मार्कअप चार्ज कर सकता है। So how to determine the cost if payment to the exporter is to be made on at a future date or in installments? अच्छा, अब वो एक इशू ये है कि अगर बैंक ने भी पेमेंट पूरी नहीं की है, बाद में करनी है, इंस्टॉलमेंट्स में करनी है, तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे? तो उस सूरत में फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि जी आप इधर यू वेट कि जी पहले बैंक अपनी पूरी पेमेंट कंप्लीट कर ले और फिर वो अपनी कॉस्ट डिक्लेयर करे, विच इज प्रैक्टिकली लॉस फॉर द बैंक। ठीक है, बैंक ऐसा नहीं करना चाहेगा, तो इट विल बी बेटर कि बैंक इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ मुराबाहा द डील में बी डन ऑन मुसावमा। ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू कॉस्ट आप इसको कर लें अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे बैंक ने भी अभी पूरी पेमेंट नहीं की है। Number 10, issue number 10 is rescheduling of payment in Murabaha. Rescheduling is again a practice which is followed in conventional banking. If you have taken a loan for, let's say, uh, uh, 12 months, so later on you can negotiate with the bank to increase the ड्यूरेशन ऑफ द लोन, यानी 12 मंथ्स की बजाय आप कहते हैं कि जी मुझे 18 मंथ्स दे दें, आई वांट टू रीपे दिस लोन इन 18 मंथ्स, तो बैंक क्या करता है उसमें 6 मंथ्स का मजीद इंटरेस्ट ऐड करके वो आपके लोन को रीस्केड्यूल कर देता है। अब ये जो प्रैक्टिस है ये कन्वेंशनल बैंकिंग में क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट तो वहाँ तो ये फॉलो की जा सकती है, लेकिन मुराबाहा के केस में नहीं की जा सकती, इसलिए कि मुराबा तो सेल है और सेल में आपने कॉस्ट पहले डिटरमिन करनी है। तो वंस यू हैव डिटरमिन द कॉस्ट, ठीक है, जब आपने एक दफा कॉस्ट फिक्स कर ली फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। रीस्केड्यूल भी करेंगे तो आप अगर क्लाइंट को एक्स्ट्रा टाइम भी देना चाहते हैं तो उस सूरत में भी आप उससे एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये रीस्केड्यूलिंग जो है मुराबाहा की इट इज नॉट पॉसिबल। इसमें एक कुछ बैंक्स की तरफ से ये देखने में आया कि सम इस्लामिक बैंक्स propose to reschedule the Murabba price in a hard currency different from the one in which the original sale take place। कि कुछ बैंक्स ने इसको रीस्केड्यूल किया, उन्होंने कहा जी हम आपसे एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करते लेकिन हम आपकी ट्रांजैक्शन को करेंसी चेंज कर देते हैं, इसकी जो इसमें जो है हम फॉरेन करेंसी की बेस पे आपसे पैसे ले लेंगे, यानी अगर आपने पहले रुपीज में पे करना था तो अब आप हमें डॉलर्स में पे कर दें। तो चाहे उतनी अमाउंट का ही आप कॉन्ट्रैक्ट बना लें, बट अगेन दिस इज समथिंग विच इज रीस्केड्यूलिंग। मतलब ये कि आपका जो ओरिजिनल सेल कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर तो आपने प्राइस तय कर ली थी और वो प्राइस जो है करेंसी में तय होती है, कीमत जो तय होती है वो तो किसी करेंसी में तय होती है, तो बाद में तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक जो प्रैक्टिस या प्रोपोजल आया कुछ बैंक्स की तरफ से उसको इस्लामिक स्कॉलर्स ने ऑब्जेक्ट किया और उसकी वजह से ये रीस्केड्यूलिंग इन फॉरेन करेंसी इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ओके जी, द लास्ट इशू इन मुराबा इज सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले समझ लें कि क्या है। सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जी आप अपनी जो फाइनेंसिंग करते हैं उसके अगेंस्ट आप कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि आप शेयर्स की बात करें या बॉन्ड्स की बात करें, तो शेयर्स की एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो शेयर क्या है कि जी एक कंपनी ने अपना बिजनेस बनाने के लिए अपने कैपिटल रेज करने के लिए उसने शेयर्स बेचे पब्लिक को। The public purchased those shares. They became owners. They became the shareholders, and as shareholders, they obtained a part of the ownership in their company। ठीक है, तो उस ओनरशिप द पार्ट ऑफ द ओनरशिप बनने का उनको उस कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा लेने का फायदा ये है कि जी वेन एवर द कंपनी इज गोइंग टू डिक्लेयर द प्रॉफिट, the some portion of that profit will be divided among the shareholders as dividend। और जैसे जैसे कंपनी की जो है फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होती जाएगी
उसकी शेयर की प्राइस भी स्टॉक मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। So that is the this is the basic understanding of the concept of securitization. तो दो चीजें जहन में रखें कि सिक्योरिटाइजेशन के पीछे एक ऑन गोइंग बिजनेस होना चाहिए एंड दैट बिजनेस शुड बी इनडेफिनेट पीरियड। ठीक है, तो तब आप उसको सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। अब मुराबा के केस के अंदर इट कैन नॉट बी सिक्योरिटाइज, इसलिए कि ये वन टाइम ट्रांजेक्शन, मुराबा इज अ सेल, एक दफा आपने सेल कर दिया, उसके ऊपर प्रॉफिट आ गया, वो दैट ट्रांजेक्शन इज ओवर, सो दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल बी यूजलेस, इसलिए इसको हम सिक्योरिटाइज नहीं कर सकते हैं। So Muraba is a transaction which cannot be securitized for creating a negotiable instrument to be sold and purchased in secondary market. If the client in a Muraba transaction signs a paper to evidence his indebtedness towards the bank, the paper will represent a monetary debt receivable from him, and hence it cannot be transferred to a third party except at its par value. ठीक हो गया जी। तो ये इसमें जहन में रख लें कि जी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तब बना सकते हैं जब आपके पीछे कोई एक ऑन गोइंग बिजनेस चल रहा हो, ऑन गोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी देयर, सीरीज ऑफ पेमेंट शुड बी देयर। जबकि मुराबा में ऐसा नहीं है। मुराबा के अंदर जो है सीरीज ऑफ पेमेंट जरूर हमें नजर आ रही है, लेकिन वो सीरीज ऑफ पेमेंट क्या है, वो इट इज प्राइस जो आपको एक दफा एक ही ट्रांजेक्शन के ऊपर वन टाइम पेमेंट है, एक ही दफा वो प्राइस मिलनी है, और वंस दैट सीरीज ऑफ पेमेंट इज ओवर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट विल बिकम यूजलेस। So that's all about this chapter on मुराबाहा। ये लेक्चर मैंने जो है वो आपके साथ ऑनलाइन लिया था, लेकिन चूंकि उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और दूसरा उसमें इशू ये था कि while I was recording, that was my first experience of using Google Meet। ठीक है, तो गूगल मीट में आई वॉज रिकॉर्डिंग इट अंडर द परसेप्शन के जी इसमें मेरी वो स्लाइड्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड हो रही होगी, बट एक्चुअली इट वाज नॉट हैपनिंग। वो बजाय प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड होने के वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, और आई वाज नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट, तो स्लाइड्स आपसे मिस हो गई, जिसकी वजह से उस लेक्चर को थोड़ा समझना आपके लिए प्रॉब्लम था, हो सकता था। तो मैंने उसको फिर ये दोबारा से सिर्फ स्लाइड्स के साथ इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो ऑलरेडी दिस क्लास टुक प्लेस, कुछ स्टूडेंट उसमें प्रेजेंट थे, जवेरिया वाज देयर, अरसलान वाज देयर, दो तीन स्टूडेंट उसमें अवेलेबल थे। तो हमने ऑनलाइन भी इस क्लास को कर लिया था, लेकिन दोबारा मैंने इसको वॉइस के साथ रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दिया। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ मुराबाहा, काइंडली गो थ्रू देम इफ यू हैव एनी क्यूरीज, कोई भी आपको इसमें इश्यूज नजर आते हैं उनको देख लें, और इंशाल्लाह वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।